Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin again, and this time I have come up with the very interesting topic or very important topic of the rain-fed agriculture, that is mulching. So, this mulching part will be covered in two parts. So, today I have come up with the part 1. So, in this lecture, you will be getting the answers of the following questions, like who gave the term mulch, from which language actually this mulch has been derived, what are organic, synthetic, and plastic mulches, how does mulch work, and what is the thickness of plastic mulch for different crops, and many more. So, without much ado, let us start this lecture for you all. So, first of all, you see, the term mulch was first coined by Wagner in 1960. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि आपकी जो टर्म मल्च है वो वैगनार ने 1960 में सबसे पहले कॉइन किया. ओके, देन द वर्ड मल्च was probably derived from the German word. So now again, if you see the etymology of the mulch word, you see it has been derived from German word, and the word is Mulch, Molsch, which means soft to decay. Okay, so it has been referred to the gardener's use of straw and leaves as a soil cover, according to Jacks and his co-workers in 1995. And this mulch is also known as sheet composting. Okay, what do we call it? Sheet composting. But now in the recent times, this mulch has got number of definitions. Okay, and but the essence of the mulch remains the same. So now, up to this, it is clear who has given the term. Wagner in 1960. It has been derived from which language? German language. The word Mulch, and the mean of this word is soft to decay, and it is also known as sheet composting. Now, what exactly mulching is? So, mulching is the process of covering soil around the plants with an organic or synthetic material to create congenial condition for the plant growth, development, and efficient production. So this definition was given by Bakshi et al. In 2015. तो मल्चिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम सॉइल को कवर अप करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक या सिंथेटिक मटेरियल से, ताकि आपका सॉइल का और आपके एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैरियर क्रिएट हो सके. और इस बैरियर के कारण क्या होता है कि इट क्रिएट्स वेरी कंजीनियल एनवायरनमेंट फॉर द क्रॉप ग्रोथ प्रोडक्शन. ओके, अब देखते हैं कि एक्चुअली में हाउ डज दिस मल्च वर्क. सो यू सी इन दिस डायग्राम, two signs are used. In one case where there is a mulching, and where in the another case there is a bare soil. So in the bare soil, you see in the right side, when there is a bare soil, there is no mulch. What happens? Your sunlight directly affects the soil, and what happens with this? The heat builds up, and because of that your moisture is lost due to the evaporation. Okay, moreover your plants wilts because of the moisture stress. Why? Because of the more evaporation, moisture is lost, and hence your wilting symptoms may arise in the plants. And moreover, if you see, the rains and the sprinklers, they splatter and erode the unmulched soil. तो आप देख रहे हैं कि जो राइट साइड में बेयर सॉइल है वहाँ पर मल्च नहीं है, और जब मल्च नहीं है तो आपका रेन का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट हो रहा है, तो सॉइल इरोजन के चांसेस हैं. ठीक है, देन आपका जो प्लांट्स हैं वो मॉइस्चर स्ट्रेस फेस कर रहा है क्योंकि विल्टिंग सिम्टम्स हो रहे हैं. मोर ओवर आपका जो मॉइस्चर है वो ईजिली लॉस हो रहा है बिकॉज देयर इज नो बैरियर इन बिटवीन द सनलाइट एंड द सॉइल. बट अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, देन एग्जैक्टली यू विल कम टू नो हाउ डज दिस मल्च वर्क. So basically you see we have created mulch bed here, and now mulch keeps the sunlight from reaching the soil and minimize the evaporation. So आपका mulch क्या कर रहा है? एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, और उस बैरियर की वजह से जो सनलाइट है वो आपकी कहाँ पर नहीं जा पा रही है? सॉइल में नहीं जा पा रही है, एंड देयर इज नो बिल्डअप ऑफ द हीट, and because of that there is a it reduces the evaporation loss. Again, if you see,
that the weed seeds which require light, because of this barrier of the mulch, they are not exposed to the light as such, and that's why they stay dormant under the mulch condition. तो आपके weeds भी यहाँ पर control हो जाते हैं because of the mulch. Then if we are using any organic mulch, so ultimately this organic mulch breaks down or decomposes and certainly adds to the nutrition pool of the soil. So it releases nutrients, and these nutrients are uptaken by the plants. So it means it also maintains the soil fertility and also maintains the plant nutrition. Moreover, because of this mulch, this direct impact of the sun as well as the rain is checked. So इट मीन्स स्प्लैश इरोजन यहाँ पर रुकेगा, तो आपका जो सॉइल इरोजन है, वाटर इरोजन की प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी हद तक हमारी सॉर्ट आउट होगी. सो यू कैन थिंक ऑफ कि दिस मल्च इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज वेयर योर सॉइल कंजर्वेशन इज नीडेड. तो जो सॉइल कंजर्वेशन आपका यहाँ पर नीडेड है, तो मल्चिंग कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली. तो बेसिकली ये क्या करती है, एवेपोरेशन लॉसेस को कम करती है, और दैट इज हाउ इट मेंटेन्स योर सॉइल मॉइस्चर बैलेंस, एंड इवन इट ऑल्सो रिड्यूसेस योर सॉइल इरोजन एंड वाटर इरोजन. ओके, सो मूविंग ऑन, let us see what benefits we get from the mulching. So you see, as I've already spoken in the previous slide, that it reduces direct impact of the raindrops on the soil particles and controls soil erosion, or you can say the splash erosion. The splash erosion is the first stage of the soil or the water erosion. Okay, then it increases the infiltration. So infiltration means the entry of the water inside the soil is known as infiltration. तो आपका infiltration भी increase होता है because of the mulching. Okay, it reduces the velocity of run of water. Yes, तो आपका जो run of water है उसकी velocity को भी ये reduce करता है. Then it controls your erosion losses. It improves soil moisture storage from the rainfall. Then it controls the evaporation losses. It suppresses the weed growth. Then it influences thermal regime of the soil by reducing soil temperature. तो soil temperature को भी maintain करने में आपका help करती है आपकी mulch, because it acts as an insulating material. Then it improves the microbial activity. Yes, particularly जो आपकी organic mulches होती हैं, they can be used as a substrate of food for the microorganisms, and तो इसीलिए microbial activity वहाँ पर increase हो जाती है. तो it means your mulch can impact all three properties: physical, biological and the chemical properties of the soil. Then it also controls the salinity development, and it can be incorporated as a manures later. So these are the benefits. तो इतने सारे benefits हैं इसके, but yes, कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. So इसके अगर हम demerits की भी बात करें, so yes, अगर हम आपकी सिंथेटिक कोई मल्च यूज़ कर रहे हैं, लाइक योर प्लास्टिक मल्च, तो इनिशियल कॉस्ट कैन बी वेरी हायर. तो इट इज़ ग्रेटर इनिशियल कॉस्ट. देन अगेन, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ द मटेरियल इज़ अ प्रॉब्लम. इट इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द मल्चिंग. येस, इट इज़ लेबर इंटेंसिव. लेबर आपको चाहिए अगर आपको कोई भी तरह की मल्च को स्प्रेड कराना है या लगवाना है, तो येस, इट इज़ लेबर इंटेंसिव. Then sometimes your organic residues which we are using as a mulch, they can also spread the disease. Okay, so they can also act as a pathogen medium. Okay, then it increases the crop weed competition. Okay, so these are the demerits of the mulching. Now let us talk about the types of mulch. So एक जनरल क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले लेंगे पार्ट 1 में, देन जो स्पेशल टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्चिंग है वो हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे. सो this mulch has been categorized into two categories: organic mulches and synthetic mulches. So first of all, let us take the comparison between organic and inorganic mulch. So you see the first difference. In organic mulch, it includes any material of the natural origin. तो जो भी material natural origin का है, that comes under your organic mulches, like your grass, your straw, your leaves, your sawdust, and that decomposes naturally. So first point in the organic mulch, that it is of
natural origin, and I have given the examples here. But in case of inorganic mulches, you see it includes inorganic materials such as plastic films. Okay. Then the second difference lies it has relatively low cost, especially if reusing farm waste and crop residues are used. तो ऑर्गेनिक मल्चेस रिलेटिवली लो कॉस्ट की होती हैं, और स्पेशली जब हम आपका फार्म वेस्ट को या क्रॉप रेसिड्यूज को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कोई भी उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं बढ़ता है. बट अगेन इन इनऑर्गेनिक मल्चेस, तो जो सिंथेटिक मल्चेस जिनको हम बोलते हैं, इट इज़ मच एक्सपेंसिव देन द ऑर्गेनिक मल्चेस. Then the third difference is, like in case of organic mulches, it is not easily available in large quantities. But in case of inorganic mulches, it is often available in large quantities at commercial centers because they can be manufactured. अब आप पूछ रहे होंगे कि लार्ज क्वांटिटीज में क्यों नहीं है ऑर्गेनिक मल्चेस. सो यू सी योर ऑर्गेनिक मल्चेस कैन बी यूज्ड एज अ फीड. सो दे हैव मल्टीपल यूजेस. सो सर्टेनली होता क्या है कि आपके जो फार्मर्स हैं, they can use that leftover farm residue as a feed and for other purposes like for fuel purposes. So that's why its availability is low when it comes in large quantities, क्योंकि आपको इसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ता है. 10 टर्न्स, 15 टर्न्स, 20 टर्न्स, इतने अमाउंट में हमको चाहिए होती हैं. देन ऑर्गेनिक मल्चेस हाई रिप्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी, बट लेकिन इनऑर्गेनिक मल्चेस की बात करें तो लो मेंटेनेंस एज वेल एज लो रिप्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी इज देयर. देन डिकम्पोजिशन रेट सिंपल, आपका ऑर्गेनिक मल्चेस का ज़्यादा होगा और इनऑर्गेनिक मल्चेस का कम होगा. देन ऑर्गेनिक मल्चेस, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, ट्रांसपोर्ट एंड ले. बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक मल्चेस, दीज आर वेरी ईजी टू हैंडल, ट्रांसपोर्ट एंड ले. एंड last one is organic mulches mein it does not suppress weed growth as such, okay, but yes, inorganic mulches is drastically suppresses the weed growth. तो ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे ये करता है. okay, so let us talk of the organic mulches as such. अभी तक हमने सिर्फ brief में difference देख लिया है. now organic mulch or the organic materials such as crop residue, farm yard manure, byproduct of timber industries, when used for mulching, then they are known as organic mulches. Okay, so they do not suppress weeds, reduce crusting, so it means, and preserve moisture. Yes, तो ये वीड्स को इतना ज़्यादा सप्रेस नहीं करती हैं, बट ये क्रस्टिंग को रिड्यूस करती हैं और प्रिजर्व करती हैं मॉइस्चर को. बट देयर ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. यस, अगर जब इनका ग्रेजुअली इनका डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे आपके सॉइल में और ऑर्गेनिक मैटर भी बिल्डअप करेंगे. Organic mulches help nutrients reach plant roots, yes, and they also nurture beneficial bacteria, fungi, insects and worms. So as I've already spoken कि जो आपके organic mulches हैं, they can be used as a food substrate for number of microorganisms present in the soil. तो इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, they can nurture the beneficial bacteria, fungi, actinomycetes, insects and worms. And they do not create any post-utilization disposal problem, but yes, their availability is an issue. तो ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Now let us talk about the synthetic mulches. The inorganic materials such as plastic films, when they are used for mulching purpose, then it is known as synthetic mulch or inorganic mulch. So natural degradation जो होता है organic mulches का, that necessitates the application of synthetic mulch. Okay, क्योंकि आपकी जो organic mulch हैं वो तो naturally degrade हो जाती हैं, and thereby there is a need of synthetic mulch. So they are also known as non-degradable mulches, क्योंकि ये degrade अपने आप नहीं हो सकती और वैसे भी नहीं होती हैं plastic. Okay. यस, बट अब हमारे पास डिग्रेडेबल मल्चेस भी आ चुकी हैं, जो कि मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से डिग्रेडेबल मल्चेस अब हमारे पास हैं, बट इंडिया में इतनी यूज़ नहीं होती हैं. देन सिंथेटिक मल्चेस आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एज वेल एज इन डिफरेंट थिकनेसेस. हम देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में कि कौन कौन से कलर हैं, किस किस थिकनेस को कौन कौन से क्रॉप के लिए यूज़ करना चाहिए. दे शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन. यस, तो हम इसको डिस्पोज और रिमूव कर देना चाहिए आफ्टर द एंडिंग ऑफ द ग्रोइंग सीजन.
and yes, they are much expensive as compared to the organic mulches. तो सबसे पहले बात करते हैं white plastic mulch की, जो कि synthetic है. So white, it means इसका albedo high होगा. When I say albedo means the reflected portion of the incident sunlight. Okay, तो you know that जो white light है, that reflects all the colors, and that's why it resembles white. So it reflects more of the light to the plants and as compared to the black mulch. तो यहाँ पर एक आपको खास बात याद रखनी है कि जो प्लास्टिक मल्च है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करती हैं और ब्लैक मल्चेस एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती हैं. Then it is good for establishing crops under hot summer conditions. Okay, तो उसको समझाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर. Then it has little effect on the soil temperature. It keeps soil temperature down. Okay, तो यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है soil temperature पे, yes, but इससे soil temperature थोड़ा डाउन रहेगा. And most importantly, it repels some insects. Yes, ये कुछ insects को क्या कर सकती है, repel कर सकती है. But as I've highlighted in the second one, the black plastic mulch. चलिए अब black plastic mulch की बात करते हैं. So you see this black plastic mulch is the most predominating colored. तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला कलर है plastic mulch का in the plant production, and it acts an opaque black body absorber and radiator. Okay, so it absorbs most of the UV, visible and infrared wavelengths of the incoming solar radiation, and it does not allow sunlight to pass through onto the soil. So it retards weed growth here. तो यहाँ पर आपकी weed growth को ये retard करेगी. क्यों? क्योंकि it does not allow sunlight to pass through onto the soil. और जब light ही नहीं जा पाएगी तो आपके जो light requiring या जो जिनको हम पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स बोलते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. देन इट वार्म्स सॉइल ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड एनकरेजेस प्लांट ग्रोथ. तो अगर विंटर सीजन है तो हमें ब्लैक प्लास्टिक मल्च यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका सॉइल वार्म अप रहेगी एंड इट कैन easily encourage the plant growth. Okay, then moreover transparent mulch, okay, the transparent planting mulch, it absorbs little solar radiation but transmit only 85 to 95% of the incoming solar radiation. तो जो ट्रांसपेरेंट मल्च है, जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वही यहाँ पर भी बेसिस है इसका कि इट एब्जॉर्ब लिटिल सोलर रेडिएशन बट ट्रांसमिट कर देती है 85 से 95%. ओके, then it drastically raises the soil temperature and affect the plant growth adversely. तो इसको हमको जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो that is basically used in the mini green house. okay, तो इसीलिए मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको बोला जाता है जब हम इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट वेव लेंथ्स होती हैं वो इसके अंदर जाती हैं, देन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाता है इसमें. ओके, तो इट इंक्रीजेज द सॉइल टेम्परेचर. So it requires herbicides to prevent weed growth under it. Yes, it is known as clear plastic mulch also. तो ठीक है, जब हम कभी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च करते हैं तो हर्बिसाइड्स हम पहले ही स्प्रे करते हैं वीड ग्रोथ को सप्रेस करने के, लेकिन इससे अपोजिट एक मैं आपको किस्सा बताना चाहता हूँ जिसमें हम सॉइल सोलराइजेशन करते हैं. तो जहाँ पर जो सॉइल सोलराइजेशन है, इट इज़ एन एनवायरमेंटली friendly method of using solar power for controlling the soil borne pathogens and even the weed. Okay, so this type of soil solarization is done with the help of this transparent plastic mulch. तो होता क्या है कि जैसे कि अभी मैंने बताया ही है कि हम आपकी सॉइल को ढक देते हैं इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च से, और जो शॉर्ट वेवलेंथ्स है वो पेनिट्रेट करेंगी जब, लेकिन री-रेडिएट हो रही होंगी तो जो लॉन्ग वेव होंगी वो ट्रैप हो जाएंगी, उनकी वजह से सॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा. तो जहाँ जो भी सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हैं या वीड सीड्स हैं वो वहाँ पर क्या होंगे, टैकल हो जाएंगे, वो उनको किल कर देते हैं, उनको चेक कर देता है. ओके, सो दिस मल्च डिसइंफेक्ट्स द सॉइल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सॉइल बॉर्न डिसीजेज एंड सम वीड्स. यस, सारे वीड्स इससे कंट्रोल नहीं होते हैं, जैसे कि मैलीलोटस स्पीशीज, आपका सॉइल सोलराइजेशन उस पर इफेक्टिव नहीं होता. इसी तरह से साइप्रस रोटेंडस, उस पर भी इफेक्टिव नहीं होता है. Furthermore, this film is quite useful for successful nursery raising. Yes, हम नर्सरी रेजिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड डोंट वरी, जो सॉइल सोलराइजेशन है दैट विल बी एडेड इन माय वीडियो लेक्चर्स इन द प्लेलिस्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट. ओके, तो उस पर हम एक पूरा डिस्कशन करेंगे.
अभी यहाँ पर आप सिर्फ बेसिक आइडिया ले लीजिए इस चीज़ का. ओके, नाउ मोर ओवर अब आप बात करते हैं कि थिकनेस क्या होनी चाहिए प्लास्टिक मल्च की. So always remember, in case of plastic mulch, the thickness of the film, this film should be in accordance with the type of crop or age of the crop. So it should be minimum possible proportionate with desired life and strength. जो recommended films हैं different different crops के लिए मैं आपके लिए बता देता हूँ. जैसे कि ग्राउंडनट के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो थिकनेस आपकी 7 माइक्रॉन्स होनी चाहिए. अगर आपके शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं और एनुअल नेचर की हैं तो 20 to 25 माइक्रॉन्स थिकनेस होनी चाहिए. इफ़ देर इज़ अ बाइनियल और मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप्स है देन योर थिकनेस शुड बी 40 to 50 माइक्रॉन्स. एंड अगर पेरेनियल और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं आपकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं तो 50 to 100 माइक्रॉन्स थिकनेस वहाँ पर होनी चाहिए. ओके, so this is all about the part 1 of mulching, and very interesting facts and very interesting types of mulching will be taken up in the part 2. so पहले आप part 1 को अच्छे से thorough कर लीजिए and then you wait for the part 2 that will be of most like many questions of the competitive exams are asked from this particular topic. तो ये सभी जनरल एग्रीकल्चर के लिए या हॉर्टिकल्चर वाले जो बच्चे हैं या जो सॉइल साइंस हैं या जो एग्रोनॉमी, जो हर किसी तरह के जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं. So I think you have liked the lecture, and still if you have any confusions or any doubts you can ask me in the comment section. And so please do like, share, comment and subscribe your own YouTube channel Agri-Tutorial. And yes, do not forget to press the bell icon to get the regular updates. So this is all for the day. Thank you very much class. Stay safe, stay with your family.